Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and what we have just witnessed. We have just witnessed history being created. Glenn Maxwell scoring an unbeaten 201 against Afghanistan, helping his side to chase down a target of 292 while they were reduced to 91 for 7. Well, to talk more about this video game kind of a knock, I have with me Jamie Alter, Kanav Bali, Surama Kaushik and Taos Rizvi joining me from Mumbai. I'll quickly go to Ramya and Taos for the comments. So, Taos भाई कैसा लग रहा है ऐसा मॉक देख के लाइव सामने देख के तो ताउस भाई ज्यादा एक्साइटेड होके चले गए चलिए जेमी आप बताइए ये वीडियो गेम काइंड ऑफ अ नॉक आई मीन जस्ट अनरियल अनरियल। मैंने ट्वीट भी किया था कि मैं 28 साल से ये गेम देख रहा हूँ। मैंने 28 साल में ऐसा नहीं देखा कि एक टीम वर्ल्ड कप में, फॉरगेट अबाउट क्वालिफिकेशन, वो सब छोड़ो, अ टीम इज 91 for 7 chasing 292, one guy gets 200 not out, they put on some, पता नहीं है, मैसिव पार्टनरशिप, दूसरे बंदे ने 68 गेंदे खेल के सिर्फ 12 रन बनाए। पैट कमिंस, मैट ग्लेन मैक्सवेल टुगेदर, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग। दिस कुड बी द ग्रेटेस्ट वनडे इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। या सर मैं क्विकली फ्रॉम यू व्हाट इज द एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है ऐसा नॉक देख के सामने से प्रेस बॉक्स से देखकर रम्या Soumya, frankly speaking, it was speechless. I mean, everyone's speechless. We don't have any word how to describe this because initially what happened, the dropped catches. So it was like, okay, Maxwell will make some runs. He did make some runs. He touched that 50 mark in some 51 balls. Then he took 25 balls to touch that 100 mark. It was pretty decent till then. What happened after that three-digit mark is something beyond imagination. I completely agree with Jamie. This is perhaps one of the finest and the best ODI innings ever. Now the visuals, I could see it right in front of my eyes. Maxwell was looking so much in pain, but that valor, that courage, that sense of doing something for your team was right there in Maxwell, and he went on for shots. I believe in last 5-6 overs, it was completely fours and sixes. Maxwell didn't do much; he just smashed, and Afghanistan players were just mere spectators over there. yeah quickly he was in pain but he didn't leave the field कैचेस ड्रॉप हुए लाइक्स मिले रिव्यूज लिए एवरीथिंग वेंट हिज वे ऑल ऑफ अ सडन वो 7वें विकेट के बाद ऐसा लगा कि गेम का जो कॉम्प्लेक्शन है टोटली चेंज हो गया उस समय यार क्या क्या था क्या बातचीत थी आसपास की क्या होने वाला है कितने ही रन बन जाएंगे वहां से 200 रन बनाना और 200 रन ऑलमोस्ट अकेले बनाना यार I think सौम्या जब 95 for 7 थे, एवरीबडी वाज लाइक कि हाँ अफगानिस्तान बहुत इजीली जीत गया, चलो आज तो मैच जल्दी खत्म होने वाला है, बस वैसे भी दिक्कत I guess there's some technical issue with Suramya. Kanav, but आपने एक नाम दिया इस नॉक को अनरियल अनरियल। मैं मैंने लास्ट टाइम ऐसा कोई अगर अगर कोई पार्टी या अगर कोई देखी थी तो मैंने देखी थी 438 when Australia South Africa chased on 438 virtual games. Yeah. I haven't seen that kind of a knock. I mean 201 not out, 200 run almost अकेले बनाना, partnership देना, injury, almost injured, should have gone back to the pavilion. Almost went back to the pavilion. Adams हमका बाहर आ गए थे बैट करने के लिए. From there to taking it away from Afghanistan. I mean, what a Absolutely, Samuel. I have not seen that South Africa match. I was too young, but this is probably the best chase I have ever seen. I mean, this is probably what Kapil Dev's 175 would have looked like. I was not born yet. There is no video evidence of that, but probably this is what Kapil Dev's 175 against Zimbabwe would have been in '83. But and not just the physical stuff, just the mental stuff. To be there, to be present on the crease because the target was very far, just to think that it is achievable. I'll stay, I'll try my best, just to have that mindset, that mind power, that I'll stay on the crease, I'll try my best. And many people get these chances, these drop catches. वो LBW उनका अंपायर्स कॉल पे मिसिंग हो गया रिव्यू पे, उसको आपको उस सारे जो आपको चांसेस मिले उसको लेकर to score a double hundred in a winning run chase, it's just absolutely unreal mental power and again physical power.
the way without moving his legs he was scoring boundaries for fun. मेरे को ऐसे छक्के मारने होते तो मैं EA क्रिकेट 07 पे जाके इजी मोड कर देता था. मैं इजी मोड पे चला जाता था. मेरे को उसमें भी मुश्किल होती थी कीबोर्ड पे कभी कभार. D इनको and ज्यादा right, आसानी है. shift D and right side, right. Absolutely, he was just flicking idhar ab udhar. I mean, the bowling was obviously it went horrible. It was equally horrible, but still, to play an innings like this, it requires a lot of mental and physical strength. So this is, for me, this is the best ODI innings ever played in the history of this game, hands down. Kuch, I'll take a last comment from Suramya, and then Suramya, you can go and have a chit chat with other players in the press conference. पैट कमिंस को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा वहाँ टिकने के लिए, वहाँ खड़े होने के लिए. तो Absolutely. उसके बारे में बताइए कि Absolutely. कैसा लगा वो. Soumya, if you can hear me and if others can hear me, I completely agree with you. Pat Cummins को credit जरूर मिलना चाहिए. The way he played today, actually, Pat Cummins will never be in the limelight, right? Because today was all about Glenn Maxwell, but the way Pat Cummins batted, it was pure pure responsibility. It was an example of responsible cricket. He played Test cricket over there. To be very frank, he touched that 10-run mark in some 40 balls, and he supported Glenn Maxwell. So today, Maxwell has touched that double hundred score, and big credit goes to Pat Cummins. So hats off to Australia what they have done in this match. Well, thank you, Sarama. Thank you for joining us. And gentlemen, Jamie, coming to you, वो जो कैच ड्रॉप हुआ है, मुजीब ने जो कैच Thank ड्रॉप, you. आई मीन वो तो हॉन्ट करेगा. दैट इज गोना हॉन्ट हिम फॉर लाइफ. व्हाट डू हैव टू से, वो क्या माइंड सेटअप में था यार, क्योंकि फील्डिंग बहुत खराब रही है अफगानिस्तान की. इफ यू लुक एट बिल्कुल. कैचेस ड्रॉप करे, दैट हैज बीन वेरी वेरी बैड. No, they're again, like we said, they've done so much. शायद उन्होंने खुद के expectations को पार किया है. Fielding has been sloppy. I just think they perhaps, and who would not get carried away when you have Australia 91 for 7? Na? One very tough catch from Shahidi. He dived. Rashid was clearly shocked. Like in Mujib wala catch. I mean, you expect players even on a sloppy day to hold those catches. But look, I mean, 3 catches, 2 reviews. जब लक आपका साथ है, nobody can stop you. सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसकी इनिंग्स के बारे में कि he did not get to him right on one leg. Probably I don't know 2/3 of his runs, half the runs came on one leg. इसको फर्क नहीं पड़ा है, right? He just I think he knew आज मेरा दिन है. ये लोग कैच छोड़ रहे हैं, रन आउट्स मिस हो रहे हैं, बाकी सब आउट हो रहे हैं. रिव्यू, he was reviewed first ball, hat-trick ball. तो कहीं ना कहीं इसको लगा होगा यार, like don't, I'm saying it's very very tough for people. पता नहीं क्या ख्याल इनके कानों के बीच दौड़ रहे होंगे, but for him to say, you know what, I'm Glenn Maxwell, I'm going to stay Glenn Maxwell, right? मैं हीरो की तरह खेलता हूं, because this is how he plays. He could have just sat down, let's try and take the game deep. मैं मारूंगा, right? And the way he was going, I think around the 115, 120 mark, it became so obvious कि Pat Cummins can face 2 maiden overs. इसको फर्क नहीं पड़ेगा. And we all saw the match. एक टाइम था जब ये singles नहीं ले रहा था, right? When Rashid came back for that last over, he knew कि भाई इसी ओवर में मैं फंस सकता हूं. Because when you're on one leg, you have to stretch forward. Rashid आपको 6 के 6 अलग गेंदे डालेगा. He saw the risk. So first ball, he said, I want the single. I thought, brilliant move. He'll come against the pacer, but the moment the ball went past Rashid, he didn't have to run. क्यों भागा मैक्सवेल? इसको मालूम कि एक स्पिनर ने जब खुद बॉल नहीं रोका और जब मिड ऑन मिड ऑफ डीले हैं, स्पिनर को इतनी चिढ़ मचती है ना. That's why he took the single on the 4th ball. Brilliant match aware. उसको भागने की कोई जरूरत नहीं. And what did Rashid do on the next ball? Collected it and tried that fake throw to the fielder. तो तूने लिया क्यों नहीं है? It was just Maxwell getting under. Rashid का last over, he had no need. He was so sure कि ये मैच मैं खत्म करूंगा. Just, I've been very critical. I've called him overrated on the show many times. भाई ये epic 100 यार. Even 100, sorry. I also I'm not really a big fan of Maxwell in general, but this is an incredible knock. But अब कनव यहाँ पे अफगानिस्तान की भी यार थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गलती है. 100 लग गया ठीक है, लेकिन मैक्सवेल के 100 लगने के बाद भी 100 रन और चाहिए थे. You could have I am really
surprised with the strategy that they went with. You know, a player is playing on one leg और वो एक टांग भी बड़ी मुश्किल से हिल रही है. You make him reach out ना यार. Ball the मतलब put the ball in the for the fifth stump. Let him go towards the ball. वो पैर हिलाने पे उनको मजबूर करो. Eventually अगर वो बॉडी से दूर खेल रहा है, he will raise one up, catch हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. The easiest shots for him was a ball with a good pace coming towards his body ताकि वो बिना टांग हिलाए एक अपने फ्लिक से मारते और उनको वो हर एक बॉल वो मिली है. हर Yeah. एक बॉल और ना स्लोअर. नवीन उल्लक पता नहीं कौन सी पेस आके डालना चाह रहे हैं शोएब अख्तर की, या तो उनकी पेस बहुत तेज है. पेस डालनी है तो आप यॉर्कर डालो, उनके पैरों को हिलाने पे मजबूर तो करो उस इंसान का. और चलो ठीक है, बॉलर्स आर इनएक्सपीरियंस. यू हैव जॉनथन ट्रॉट, यू हैव अजय जडेजा, जो हम कह रहे हैं इतने Correct. टाइम से हम उनकी तारीफ कर रहे हैं. यहाँ पर वी सॉ अजय जडेजा सेइंग समथिंग टू अ स्पिनर नूर अहमद के लिए उनको लाओ, बट व्हाई डिडंट एनीवन स्टैंड अप, गो टू द बाउंड्री, कॉल द कैप्टन ओवर के बीच में कि उनको Yeah. फिफ्थ स्टंप पे बॉल डालो, उनको स्लोअर बॉल डालो. उनको पेस दोगे तो उनको वो ही चाहिए क्योंकि उनके पैर नहीं चल रहे, उनके हाथ ही चल रहे हैं. और वो जिस तरीके से उन्होंने फ्लिक के छक्के मारे, स्लोअर बॉल पे वहां छक्के नहीं मार सकते थे आप. एक ना एक बॉल बाउंड्री पे आ जाती. So I am True. really surprised कि why Rashid Khan, again we say one of the most experienced players, why didn't he go to one of the pacers and say इनको दूर डालो, क्या कर रहे हो? Why didn't Jonathan Trott, Ajay Jadeja, there are so many people who should have at least one of them should have come up and said कि try तो करो. Yeah. Okay, one guy is playing an unreal innings, it's his day probably. All you need to do is give your best play strategically. शुरू Yeah. में नई बॉल से आपको लाइनर लेंथ से विकेट्स मिल गए, यहाँ पे वो नहीं चाहिए क्योंकि वो प्लेयर का माइंडसेट कुछ और है. वो सिर्फ Yeah. हाथ चला रहा है. आप कंडीशन भी उसको अब जोन में दोगे. हाँ, आप नहीं, हाँ बॉल पुरानी हो गई है, स्विंग नहीं हो रही है, तो दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू. उनको स्लो डालो, उनको उनके बैट से दूर डालो. Yeah. ऑल ही इज जस्ट वेटिंग, बॉल डालो मेरे पे आई, मैं तो घुमा दूंगा. और आ रही है और अच्छे पेस के साथ आ रही है. ही डजंट नीड टू इवन मूव हिज लेग इवन एन इंच. तो he Afghanistan probably helped Maxwell towards their victory कि आओ हम आपको हेल्प करें 200 की तरफ जाने के लिए. It's just horrible bowling, horrible. इसमें एक और पॉइंट पे आऊंगा, एक और डिपार्टमेंट, एक और फैक्टर है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले जेमी, डू यू थिंक यहाँ पे फरूकी का ना होना दैट्स मेड अ डिफरेंस? ये एक विकेट जो नहीं गिरी, यू थिंक फरूकी See, हो शायद डिफरेंस हो जाता? in hindsight, we can say this. See, this was अगर आप पिछले वानखेड़े मैच देखे तो Pacers have had the predominant say in the second inning. मतलब हवा चल रही है. We've seen the Pacers do well, but this was not that pitch. So in theory, they were right by dropping a fast bowler. This was a slightly slower track. So it would be tough to say that now because they had to, all said and done. And I said this, I was on another show just when the innings was starting, innings break, and I said, मालूम है कि इनकी स्ट्रेंथ स्पिन है. आई एक्चुअली फील इनके जो दो पेसर्स है ये ऑस्ट्रेलिया पे भारी पड़ेंगे. एंड एट वन पॉइंट दे टुक द फर्स्ट 4 विकेट्स, राइट? यू पुट इन द रिव्यू, यू पुट इन द कैच, वी वुडंट बी हैविंग द डिस्कशन. आई नो इन हाइंडसाइट लगता है बिकॉज द फर्स्ट 10 ओवर्स जो नवीन और बाद में जब वो आया उमर्स आए, they had their tail up. End तक, like Kanav said, they were bowling absolute shit. But in hindsight, I still think they picked the right bowling attack. आपके स्पिनर्स ने मोटा मोटा काम किया, लेकिन जब मैक्सवेल ऐसा खेल रहा है क्या करे? Like it wouldn't have mattered if they had Dennis Lilly and Jeff Thompson bowling. This was his day. So पता नहीं, I still think 4 spinners were okay on this track. Yeah. And this is the same attack that had Australia 91 for 7. So I mean, drop catches, having drop one catches. drop, poor fielding and poor bowling. Poor fielding. Kanav, यहाँ पे एक पॉइंट में टच करना चाहूंगा बिफोर वी रैप द सेशन. द फील्डिंग प्लेसमेंट इन द ऑन दिस लास्ट दैट फैग एंड ऑफ द इनिंग्स, जब आपको दिख रहा है यार वो रिवर्स लॉक कर रहा है, हमने फिर शॉर्ट थर्ड में ले लिया, पॉइंट भी ले लिया, शॉर्ट फाइन लेग भी ले लिया. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑफ, ये ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था फर्स्ट इनिंग्स में, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था. आपका शॉर्ट थर्ड मैन भी ऊपर है और आप बाहर का बॉल, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. आपने अगर फील्ड वो रखनी है तो बॉलिंग उस हिसाब से करो ना. बॉलिंग उल्टा कर रहे हो. जब उसकी टांग नहीं चल रही है वो बैट सीधा हिला सकता है. ही कांट सिट ऑन हिज लेग. जब उनकी क्रैम्प स्टार्ट हुए थे, व्हाट आर यू डूइंग? मिड ऑफ आपके एक सर्कल में है, उसने उठा के सीधा चौका छक्का मार दिया. अब आपको दिस इज अ कंप्लीट माइंड गेम. जैसे जेमी सेड कि राशिद के ओवर में ही वाज प्लेइंग विद द बॉलर्स माइंड. यू हैड so many opportunities to play with his mind because he was playing on one leg. अब उसको मौका ही ना दो बैठने का. अगर वो रिवर्स स्वीप मार रहा है तो वो फील्डर पीछे रखो. अगर आप पीछे नहीं रखना
तो आप वो बॉल मत दो ना फुल कि वो रिवर्स स्विप मारे. तो Yeah. दे डिड एवरीथिंग दैट मैक्सवेल वाज प्रेइंग Yep. बिफोर एवरी बॉल. बोलते ना Absolutely. चैन कुली की Absolutely. मैन कुली करके उसने कहा चैन कुली की मैन कुली यहाँ बॉल है और मैं मारूं, वहां ही बॉल आई है. तो दिस इज जस्ट they just अफगानिस्तान लेड मैक्सवेल ऑन देयर शोल्डर. चलो आओ हम चले विक्ट्री की तरफ. ये सो दिस आते हैं. अगेन, हाँ एक साथ हम आपको जिता के लागे आते. दिस इज जस्ट हॉरिबल बॉलिंग. आई एम नथिंग टू टेक फॉर मैक्सवेल ऑब्वियसली. जितनी भी Yeah. हॉरिबल बॉलिंग हो, टू स्कोर अ 200 ऑन वन लेग इन अ चेज, इन अ रन चेज, नॉट इवन फर्स्ट इनिंग्स, And you किसी were 90 टारगेट भी चेज नहीं कर. From 91 to 7, there's the reason I'm saying is this is the best ODI innings of all time, because so much was against him. Run chase, cramps, एक टांग पे खेलना, दूसरे टीम ऑपोजिशन हावी थी 91 for 7, Yep. and to come Yep. out of it, no amount of luck, no amount of drop catches, and no amount of poor bowling can give you that strength to score a double hundred in that situation. Absolutely unreal, no matter how bad Afghanistan was here. Yeah. Jimmy, lastly, the way they have lost the game, okay, जीतना हारना लगा रहता है, बट जीतने की पोजीशन से हार गए, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डिप करता है, एंड नाउ दे विल बी प्लेइंग साउथ अफ्रीका इन द लास्ट गेम, which is a very important game as far as the semi-final spot is concerned. अब कंधे झुक सकते हैं अफगानिस्तान के, because they're not experienced at all in this format at least. No, absolutely. With each time they showed the dressing room, you could see इनके चेहरे पे tension was growing. अजय जडेजा was doing this at one point. Last time वो यूं देख रहा कैमरा को. So it's gotten to them, right? Because they've come off 3 wins. They had, मतलब ये अगर आज जीत जाती ना ये मैच अफगानिस्तान टीम, we would have said, boss, हटो. I said, पता नहीं यहाँ या कहीं और, I was, चेतन भी था वहां पे, I said, फेरी टेल कहानी अच्छी होगी अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, लेकिन ये सेमीफाइनल के लिए रेडी नहीं है. यू वांट एक्चुअली द टॉप 4 क्वालिटी टीम्स, नॉट द टॉप 4 जो पॉइंट टेबल पे आते हैं, राइट? एनीवन, इफ पाकिस्तान बीट्स न्यूजीलैंड, आर यू सेइंग दे आर द 4th बेस्ट टीम? सबको पता है नहीं है ना, पर लक उनके साथ है, राइट? सो फ्रॉम दैट सेंस इनके कंधे जरूर झुके होंगे. Even when they had them at 91 for 7, I said, भैया इनका अगले मैच against South Africa, can you imagine if it happens again? They will beat South Africa, right? But once this guy got to, like I said, 100 हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मार दिया 100, ठीक है. वो 122, 125 था, and I told my wife, मैंने कहा इसको कोई नहीं रोक सकता आज, और अब देखना इन लोग का मौसम खराब होगा. Yes, they're still there. They might beat South Africa. They've been outstanding. But just the way they were reacting, they were snapping, उनकी आंखें खुली हुई. I think they've been really dented, like you said. इनके लिए, but again, what fun it's been to watch them in this World Cup. Yeah. True. Yeah. And the polar opposite of it is the confidence that Australia will get. It's a team that feasts on this, in this performance like this. They will go to an unreal level, because this is the Australian team that hungry, that attacking Australian team that takes away victories from the jaws of defeat. You would remember, and now this is a very dangerous Australian side. So let me tell you, if India faces Australia in a semi-final or a final, I'll be scared. It's okay. India has been unbeaten so far, but if they face Australia now, I'll be really scared. Final. This is final. I don't final. Probably they'll play a semi-final with them, because they won't go to 4. Final. Yeah, final. And I'll be really scared, because this is what Australia enjoys. These performances, and this is what they feast off. Jimmy, you would remember that 2003 World Cup, Australia versus New Zealand, 98 for 7. Andy Bickle, Michael Bevan come in, stitch up partnership, and then Brett Lees and all those guys just wrap the innings like anything. And what Andy Bickle, and Michael Bevan, outstanding. That See, at that time, I think Michael Bevan, in unfair comparison, Michael Bevan was the GOAT of chasing, right? Maxwell, like we've all said, lottery hai, inconsistent hai. Bevan was not injured, but that New Zealand attack was much better. Shane Bourne आग के गोले फेंका था, but they had Andy Bickle. अब Andy Bickle ने शायद इतना नहीं हासिल किया जो Pat Cummins ने किया था, but man to man वनडे में Andy Bickle was still better. लेकिन Pat Cummins आज जो अपना ईगो को निकाल के जेब में रखा ना, I've questioned Pat Cummins' captaincy in this World Cup. I've questioned his bowling, but इसने जो आज किया ना, but I think the last 50 runs they were laughing. एक है एक ऑस्ट्रेलियन टीम जो ये टीम नहीं जीती 5 वर्ल्ड कप,
But like Fontaine or Watson was saying, हमारे DNA में है ये चीज के you push us against the wall, we'll do something. So very very dangerous. And That has South happened. Africa, good luck to you at Eden Gardens. The way they lost to India after but, reducing us to 2-3, 2-4-3. बिल्कुल बिल्कुल. They've come. They've made a massive comeback in the tournament. I mean, yeah, that's in the Brilliant, DNA. brilliant. They are the team to beat now with India. Well, मैच तो बहुत अच्छा देखने को मिल गया यार. As a cricket fan, बहुत अच्छी चीज देखने को मिली यार. बहुत. हुआ है. Brilliant knock, unreal. Video game kind of a knock बोल रहा हूँ मैं तो बहुत मजा आया. अब देखते हैं जो थोड़े बहुत मैचेस अब लीग के रह गए हैं वो ऐसे ही निकले तो और मजा आए. Well, thank you gentlemen for joining this live session. It was lovely chatting with you guys. Thank you. मिलेंगे फिर चिट चैट करेंगे इस वर्ल्ड कप. बिल्कुल. Good night. Good night.